Okay. So Hare Krishna. So our today's small topic would be, and this question came a lot of times. A lot of people asked in the class, out of the class, personally, right? And every single one of us have this particular question, right? How do I know that I'm progressing in bhakti? So we'll discuss that quickly. So Chaitanya Charitamrit, we'll start with this verse. Chaitanya Charitamrit in Madhya Leela 22.128, it says that Sadhu Sangha Nama Kirtana Bhagavad Shravan Mathura Vas Sri Murti Ras Radhaya Sevana. Means one should associate with devotees, chant the holy name of the Lord, hear Srimad Bhagavatam, recite at Mathura, and worship the deity with faith and veneration. These are the five limbs of bhakti as given by Lord Chaitanya. Hmm. He tells that these five things one should do to get advancement or progress in bhakti. Now we'll expand on these five things only. So sadhu sangha, nam kirtan, thing. The same thing what we see in the temple. These five activities should be done. These are the same five activities. Sadhu sangha, nam kirtan, Bhagavad Shravan, Sundan hearing, Mathura Vas, living in Mathura. But not everyone can live in Mathura, but at least you can make your home in Mathura. Right? Spiritual. And then Sri Murti Ras Radhaya Sevana. Arch Vigraha ki puja karna. These five things. Now we'll explain. Before that, there's a small quiz. Open your notebooks or start counting. Right. You have to take a counter. Okay. So for any question which has an answer in yes, you have to give point one. If no, then zero. First question. So these are the questions which can tell you actually are you progressing in bhakti or not. Right. It's not like this is a exact. This is not the set of questions it's written, but some criteria, some small things. Right. So you can have the counter ready. Okay. So question one. I give priority to my chanting first, not after all my work is finished. Like I will do the बोलना नहीं count करो. ठीक. ठीक. कि I will do my chanting, I'll finish my chanting, or I will start my chanting. I will say that way. Only when my all work is finished, then I will start my chanting. हाथ मत उठाइए प्रभु जी आप काउंट करिए. हाँ. मतलब आपको उठ के ब्रश करना पड़ेगा. It's not about that, but it is like, do you actually give priority to your chanting? It's a morning, I have to complete my chant. Something like that. It's not like कि जब मेरा सारा काम ऑफिस का खत्म हो जाएगा, सारी मीटिंग खत्म हो जाएगी, अगर टाइम बचा तो I'll do some chanting, नहीं तो कल तो वही. Hmm? What बात है? That's fine. So you have given the fixed time. You have given priority of chanting to that, right? आप सोचिए. That is for you to think. Exactly right. That is means your end of the day means least priority thing. आप when you do माता जी रात में कभी काम नहीं होता. We'll discuss that about in detail. ठीक है. We'll discuss that. अभी केवल counter अपना on. Second question. I proactively look for service opportunities. Third question. So second question, just in small explanation. I don't wait for मुझे अगर असाइन होगा सर्विस तो मैं करूंगा नहीं तो you only live once. ठीक. हाँ. ठीक है तो I look for कि कहीं is there a way I can serve like that. Third, my travel plans are now actually travel plans की वजह vacation plans मुझे लिखना था. ठीक. My vacation plans are now to the spiritual places, not towards the bars and beaches of Goa. Right. That's the only example I could remember. Fourth, I don't like going to movies or I don't feel like going to movies or watching serials on TV these days. Hmm. Hmm?
इट कैन बी मिक्स, मतलब दैट्स व्हाई डोंट फील लाइक, मतलब ऐसा नहीं कि कंप्लीट कट ऑफ. कंपेयर योरसेल्फ फ्रॉम द स्टार्टिंग टू what you were 2 3 months back, a year back, and now compare yourself with that. Hey, you cannot cut off all those things. But then just think, अभी अब ऐसा लगता है कि यार नहीं देखेंगे तो क्या, जो पहले इच्छा होती थी, अरे यार ये मूवी आई है. आई कैन टेल माय एग्जांपल, अरे मार्वल मूवी आई है, सुपर हीरो, ये कैसे देखना है, ये तो उसका पार्ट है. ठीक. अभी कितनी, उसके बाद से 2 साल से इतनी मूवी, आई हैव नॉट गॉन टू अ सिंगल मूवी एंड आई डोंट फील बैड. ठीक. मतलब समथिंग लाइक दैट, जो आपको बहुत प्रिय था पहले. Then I'm less worried or have fear of losing old friends or losing my social circle. I have to put this question into positive frame, right? But it is like I'm worried if I go to Bhakti, I'll lose my friend. Right? Because you have to answer yes, so it is like I'm now less worried. It ठीक है, don't care. I'm less worried of fear of losing my old friends or losing my social circle. कि अगर मैं ये सब करने लगा तो मेरे पुराने फ्रेंड चले जाएंगे, ठीक है, मेरा सोशल सर्कल खत्म हो जाएगा, ऐसा. ठीक. My music taste has shifted from bhajans from to bhajans from Bollywood songs or pop songs or any other language songs. Other language मतलब English songs or whatever. Raw, rap, metal, something like that. Seven, I feel bad when I use cuss word. जो पहले quite prominent था. What the, अब अब द डक हो गया है, या कुछ और हो गया है, या कुछ भी नहीं रह गया है. नाउ आई डोंट फील, आई एम यूजिंग, आई फील अरे यार क्यों बोला, नहीं बोलना था. आई लुक फॉर मोर टाइम टू रीड Srila Prabhupada's book or other Vaishnava's book. मतलब आई ट्राई टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज, अरे कभी ऐसा मिले छुट्टी हो तो मैं थोड़ा पढूं. But I'm not saying कि you have to read, you have finished. You're like, I try to find some time कि where I can get some time to read. Any book, any spiritual book, not what's your book? Da Vinci Code. ठीक. एक वो एग्जांपल याद है क्योंकि मेरे पास पड़ा हुआ है इसलिए. ठीक है. All right. My money and materialistic mindset is reduced significantly. Previously, पैसा कमाना है, जॉब चेंज करना है, अरे यार उस कलीग का तो 50 लाख की जॉब लगी, अभी मैं 35 पे हूँ, अब क्या होगा. आई एम बिलो पार, आई हैव टू चेंज द जॉब. ठीक. प्रमोशन लेना है, ये वो. आई एम नाउ लेस वरीड अबाउट दीज थिंग्स. ठीक. हाँ यार देखेंगे, भगवान है ना करने वाला. नंबर 10, if I get some free time, I feel like spending it for spiritual activities. I don't have to explain that. Next, I try to find positive even in the adverse conditions. कि कुछ गलत भी हो रहा है, कुछ गलत भी मेरे साथ हुआ या मैंने देखा, या कोई somewhere things happen which is not as I expected, but still I try to find positive in that. नहीं हुआ. अरे अभी क्वेश्चन नहीं हुए. राइट. सो पोस्ट कर देता हूँ. ठीक. I'm less worried about opinions from friends and relative about my spirituality. कुछ तो लोग कहेंगे. I'm like, जिसको जो बोलना है बोले. I don't care. I have a regular set of spiritual practices to do daily and I do it religiously. I make sure that if I have taken that I have to do 16 rounds chanting or I have to do Archavigra Seva, then I do it daily without fail. Right. That. It means that. I don't much miss my old life and friends, which were before spirituality. Old life मतलब previous life नहीं, जो याद ही नहीं. Right. मतलब अब ऐसा लगता है कि पहले जो शुरू शुरू लगता था यार, अरे यार कहाँ हम जाते थे हर संडे, संडे नाइट आउट होता था, अब तो जाते ही नहीं है. आई मिस दोज डेज. आई डोंट मिस मच. नहीं मतलब अगर आप नहीं मिस कर रहे हैं तो यस होगा ना. अगर आप नहीं मिस कर रहे हो तो यस होगा, अगर आप मिस कर रहे हो तो नो होगा. मतलब आपको ये सोचना है कि whatever is अनुकूल to your bhakti, that is yes, right, in that way.
ऐसे आप सोचिए अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो। ठीक, यहाँ पे सारे मतलब 1 फॉर पॉजिटिव टुवर्ड्स भक्ति, 0 फॉर नेगेटिव टुवर्ड्स भक्ति, ऐसे। Now next, I'm I feel uneasy when I'm unable to attend the class regularly. Like I feel like अरे यार क्यों मिस कर दिया, मतलब I should have done that. Right. I'm enjoying hearing more lectures during weekdays. I'm not talking about weekends. Hmm. This is something important. I enjoy during weekdays. Weekend में तो सुन ही रहे यहाँ बैठ के. ठीक. My mind thinks more about Bhakti, Krishna and how to improve myself. हम वॉक कर रहे कहीं जा रहे तो दिमाग में बाकी ख्याल जो पहले आते थे अब उससे ज्यादा ये ख्याल आते हैं कि हाउ कैन आई इंप्रूव माई सेल्फ, अबाउट कृष्णा, अबाउट हमने क्या सुना क्लास में एंड ऑल दोस थिंग. आई एम नाउ सर्विंग माय डीटीज विद मोर लव एंड केयर. whoever serves the deity, I have made or trying to make my temple more like Vaishnava temple. Very important point here, because we have been to lot of sessions here where we explained how a temple should be, a proper Vaishnava temple. At least I have tried making some changes into that, how it should be. What changes it could be? If I actually trust that Krishna is Supreme Personality of Godhead, it shouldn't be my temple ki all the other demigods are, or all other devatas are on top of Krishna and Krishna is somewhere below. Right? If I believe that, then he should be on the top. मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर प्रधानमंत्री है तो उसको सबसे पीछे वाले सीट पे दे दो और बाकी मंत्रियों को आगे बैठाओ. You don't do that, right? So that's important point. Now my retirement plan is aligning with my spirituality. क्या करो? अच्छा, तुम बताओ, अपना करो आप. You have to count yours. You're a separate soul. That your papa's soul. Finger, एक दो तीन चार. उसको ज्यादा पता है. नंबर 20. My retirement plan is aligning with my spirituality. रिटायरमेंट होने के बाद I have some plans to do something about spirituality. Hmm? ऐसा तो कोई नहीं हो सकता मैं मुझे ना सोचा हूँ. Who is not thinking about spirituality or retirement? आप ईपीएफ कटवाते हो, मतलब प्लान नहीं, कभी आप सोचते तो हो ना. ऐसा कैसे हो सकता है? यू हैव एनपीएस, यू हैव, आप ईपीएफ अपना कभी चेक करते हो? कभी नहीं. आप सच में नहीं सोचे हो? आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस. हाँ, आपने रिटायरमेंट सोचा है? ठीक है, आप सोचिए. ठीक, आप ऑलरेडी रिटायर हैं, आप मत सोचिए. तो जब पहले का मत सोचिए, अभी का ये क्वेश्चन आज के लिए, 10 साल पहले के लिए नहीं. आप उसको क्वेश्चन को स्किप करिए और क्या. ठीक. आई एम नॉट फीलिंग ओवरवेल्म्ड इफ देयर आर मोर देन वन क्लास इन अ वीक एंड ट्राई टू अटेंड हैप्पीली इफ पॉसिबल. कि अगर हफ्ते में 2 क्लास भी हो गए, अरे यार 2 क्लास क्यों यार, एक कम थे क्या, प्रभु जी 3 घंटे कम बैठाते कि एक और क्लास. आई डोंट फील ओवरवेल्म्ड. एंड लास्ट, दिस इज लास्ट. ठीक. I do extra rounds of chanting if I have some time. Like I try to do extra rounds कि चलो कुछ तो करना है. And even if not on beats, I try to take God's name while walking and all this. Right. So सबके स्कोर हो गए. पापा का नहीं चेंज करना है, अपना करना है. ठीक. So what's your score? अरे बताना नहीं, आप इसमें देख लीजिए. What is your score? If your score is somewhere between 0 to 7, it's alarming situation. You have to work a lot on. You are progressing, but in a very slow pace. You are progressing, but in a very slow pace. Take. If your score is somewhere between 8 to 15, you are progressing in a moderate space, but still there are scope of improvement. Right. If your score is somewhere between 16 to 22, it's a good progress.
Right. मतलब think your score is yours. तो आप पूछ मतलब that was the question, how can I know I'm progressing is bhakti? You know, are you, and how fast you are progressing or not. Right. So I'll not ask anyone is good, don't worry. It's confidential. And apart from those people जो enthusiastically अपना score बता रहे हैं, ठीक ठीक है तो now in Nectar of Instruction there is a very beautiful book written, Updesamrit, Nectar of Instruction. Text 3 says that उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत् तत् कर्मा प्रवर्तता संगतादात शतो मृत सद्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति. So Srila Prabhupada explains, translates it. There are 6 principles favorable to the execution of pure devotional service. Now, we discussed that, right? All those questions, if your answer is yes, that means it's your anukul to your bhakti. It is in line with your bhakti, if your answer is yes for that. If it is no, it is not in line with your bhakti. Right? Yes will take you progress towards bhakti. No will either keep you where you are or it will take you down. Right. Now there are 6 principles favorable to the execution of pure bhakti. Being enthusiastic. Very important. कि हम बस नाम के लिए कर रहे हैं यार कि बस कुछ तो करना था तो कर लेते हैं और वी आर रियली enthusiastic. I'm actually having fun. I'm doing it. I'm really feeling enjoyment. Here, I want to do it. ठीक है, something I'm getting new and excitement है to do this. That enthusiasm is there कि हाँ I want to do some more. एक होता है ना ऑफिस में कि मेरा आई टेक अबाउट माई केस जितना काम मिल रहा है मैं उतना ही करूंगा उससे ज्यादा मैं कुछ लूंगा नहीं. ठीक है जो होगा देखा जाएगा. अदरवाइज जब when I was in PwC, one of my senior was leaving PwC and I asked कि कैसे इतने साल survive किए. He said one rule: if you'll get exposed, your life is hell here. The moment you get exposed, everyone knows you, and then your life is screwed. Then you are the big four वाले PwC वाले employee हो जाओगे. If you are not exposed, your life is amazing at the same place. ठीक कि तो यहाँ पे enthusiasm अगर ऑफिस में enthusiastically हाँ मुझे ये भी करना है ये proactively ये इनिशिएटिव लेना वो लेना है तब सब आपको जानेंगे और be sure that you are going to get 10 times more work than you are thinking. Not 10, at least 2 times. Right. And if no one knows you, the same work क्योंकि हाइक तो उतनी ही मिल रही है. ठीक. हाइक तो उतनी ही मिल रही है. तो अगर कोई नहीं जानेगा आप उतने से ही काम में ठीक है आपका जीवन आराम से चलेगा and you'll actually enjoy your life. Right. क्योंकि हाइक आपको लिटरली उतनी ही मिल रही है. I have seen both sides of it. Enthusiastically 3 प्रोजेक्ट में एक साथ काम किया. This is expected from you. ठीक एक बंदा एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है 4 घंटे. This is expected from him. Both are getting 6% hike. Like ठीक है, the expectation from me is like somewhere go. I'll go somewhere जहाँ पे थोड़ा कम काम करेंगे. जब 2-4% ही मिल रहा है तो 2-4 वाली कंपनी में जाओ आराम से एंजॉय करो. क्या प्रॉब्लम है? खाने के लिए तो मिल ही रहा है. Right. Second, endeavoring with confidence. Like I'm confident. निश्चय है कॉन्फिडेंस है कि दिस प्रोसेस विल टेक मी फर्दर. राइट ये हमारे दृढ़ विश्वास है एक कॉन्फिडेंस है. इट्स नॉट समथिंग विच इज जस्ट one of the philosophies. But I have confidence I am going to grow when I follow this. Then being patient, and I know it will take time. It does not happen overnight. I know it will take time. So I am patient to follow this. Act according to the regulative principle. And whatever is prescribed duties, I will follow. Right. At least if I am not able to do completely, which should be our goal to do it completely, but at least the 4 regulative principle to completely ही करना है. मतलब there is no concession there, but there are a lot of more regulations. But at least whatever I can do, I will try to follow that. But regulative principle there is no concession. That 4 is non-negotiable. ठीक क्या है 4? बहुत अच्छे. हाँ. ठीक. Fifth, abandoning the association of non-devotees. ये बहुत ही controversial point होता है.
और सबसे ज्यादा डरावना पॉइंट, इट डज नॉट मीन दैट, ये डरावना इसलिए होता है क्योंकि आप अगर वर्ड बाय वर्ड जाओगे तो आप कहोगे तो क्या आप दुनिया छोड़ के निकल गए, जाके मंदिर में रहने लगे। इट डज नॉट मीन दैट। इट मीन्स दैट कि एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं, या एक सिंपल जनरल लाइफ एग्जांपल, कि आप यहाँ पे आके क्लास कर रहे हो, ठीक है, आपने ये कुछ सीखा, एंड देन यू गो टू योर फ्रेंड्स हु आर नॉट स्पिरिचुअल, हु आर लाइक YOLO फ्रेंड्स, you only live once friends, you only live once, take that but drink घी, वो घी की बजाय कुछ और पीते हैं, ठीक, ठीक, एंड यू गो देयर, एंड देन देयर इज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन, कुछ हुआ, अरे यार ये whatever, office talks or something like that, और some any ग्राम ग्राम व्यवहारता जिसको बोलते हैं, ठीक, ऐसा सम टॉपिक हैपेंड, और स्पिरिचुअलिटी की बात शुरू हुई, अरे देखो हिंदू धर्म में एक बाबा पकड़े गए जिन्होंने इतने लड़कियों के साथ ये किया था, देन दिस एंड दैट डिस्कशन वेंट फॉर 2 hours, व्हाट विल हैपन टू व्हाटएवर यू हैव लर्न? प्रजल्पा तो ठीक है, वो तो आप टर्म दे रहे हैं, व्हाट विल हैपन टू योर कॉन्शियसनेस, व्हाट यू एक्चुअली गेन्ड व्हेन कमिंग टू द क्लास? It will actually degrade, right? It means, it does not mean you leave all the world and you go to some place जहाँ कोई भी non devotee ना हो. It means that you limit your interaction with non devotees to any extent, काम से काम रखो, ठीक, ज्यादा बकवास उनसे करने की जरूरत नहीं है, और एटलीस्ट नॉट ऐसा बकवास जो आपके स्पिरिचुअलिटी को अफेक्ट करे, और समथिंग विच deviates you from the path, ठीक, that is something which it means. And six, following in the footstep of previous acharya, परंपरा को फॉलो करना, what is written, what is said in our परंपरा, we have to follow it is, and if we follow these principles, अगर हम ये सारी चीजें फॉलो करते हैं, then it's a guarantee that pure devotional service is a success, right? That's what Updesamrit, vector of instruction, says that. So we need to know, where am I right now? We just had this goal, and we also need to know where I want to go. राइट, वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू हैव अ गोल, ऐसा नहीं कि हम यहाँ हैं तो बस हम यहीं रहेंगे, कि बस हो गया, इससे ज्यादा यार 2 घंटे कर लेते, कम है क्या हफ्ते में? 2 घंटे मैं तो आपको करने नहीं देता हूँ, 3 घंटे तो जाता ही है, ठीक, बट मतलब where you want to go, that is everyone has its goal, ठीक, like we have goal in life, माते रिटायरमेंट गोल नहीं बनाए हैं, बट आई थिंक आज से वो करेंगे, ठीक, और एटलीस्ट स्पिरिचुअल रिटायरमेंट गोल यू शुड हैव, ठीक, इफ नॉट फाइनेंशियल, फाइनेंस तो भगवान देख लेंगे, if you surrender to God, बाकी वो he will take care, right? But you need to know where you have to go. So some criteria about this, like how you know you are progressing in bhakti, when you start having less regrets about your past, यार ऐसा हो गया था, मैंने ऐसा कर दिया होता, मैंने वो किया होता, ऐसा वैसा, ठीक, काश, जब काश आपके उससे हट जाए, तो आप समझिए आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, आपको समझ में आ रही है चीजें, ठीक, लेस अटैच टू द प्रेजेंट, what does this mean? That this is mine, take, I'm very attached to that, this is mine, no one should be able to take, this is my position, this is my job, this is my salary, no one should be able to overtake my position, no one should be able to um, do more bhakti than me, ये तो मेरे साथ ही क्लास ज्वाइन किए थे, वो 16 माला कैसे करने लगे, ठीक, और मैं अभी 5 ही माला पे, ठीक, अटैच टू थिंग्स, और उनको उनको ऐसा मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला, समथिंग, नॉट अटैच टू द प्रेजेंट, एंड लेस वरीड अबाउट द फ्यूचर, अरे क्या होगा, इतना साल हो गया अभी तक कुछ नहीं हुआ, 1 साल से भगवत गीता पढ़ रहे हैं, अभी तक चैप्टर 2 भी नहीं खत्म हुआ, राइट, कब खत्म होगा, क्या होगा, नहीं प्रभु जी आपके लिए नहीं था ये, राइट, लेस वरीड अबाउट द फ्यूचर, he will take care, you are in the process, he will take care, right? So when your mind is less worried about the dualities of life, we read about dualities of life na, sukh dukh, शीत शीतोष, बाकी सारी चीजें, राइट, पर देन एग्जैक्टली, सो
whatever comes in our life we have to take, we have to accept, and we should happily accept that it is nothing but prasadam from Krishna. Because everything what happens to us, every karma, every result of a karma, that is not just the payback for us. It's something for us to understand, something for us to learn. It's a teaching for us. And if we don't learn the lesson from this, then this karma will come again. It is again will repeat the same mistake, and this will come back again. The result will be getting again. If we don't understand what we have to learn from the result of this karma. If something bad is happening, we have to understand, like we discussed that last class also. Right. Ki there are something which we should not have done. We should not do that. Yeah. Whatever comes, except as a prasadam of Krishna. Right. And yeah, that this is something in one of the session, like if you are not constantly keeping your eyes open, then that you are how is spending your time and how you are keeping balance, then no for sure you are going out of balance. Right. You have to keep on looking back, retrospect, where were you and where you are going to be. Now, how you can do the retrospect, how you can keep check your bhakti, and not always having this 22 set of questions, but what other ways are there? So, some practical tips how we can actually advance in our bhakti, or how we can know. So, one very, very, very important, and I would say most important thing, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज. जब बच्चे रहते तब से सिखाया जाता है, फॉलो करते नहीं करते ये अलग बात है. ठीक. बट व्हेन यू गो अर्ली टू बेड यू विल एक्चुअली वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. एंड द पॉइंट माता जी आप बोल रहे थे कि इन द नाइट you think like uh, you will be less disturbed or less influenced, or हाँ जो भी disturbed is the word. बट आप ऐसे सोचिए, जब आपको ऑफिस जाना है, व्हाट टाइम डू यू डिसाइड टू गो टू ऑफिस? यू हैव 9 to 6 ऑफिस, लेट्स से. व्हाट टाइम डू यू थिंक यू गो टू ऑफिस? अगर आपको जाना है फिक्स टाइम तो ठीक है, बट आपको पता है 8:30 बजे बहुत ट्रैफिक होता है, देन व्हाट यू विल डू? अर्ली यू गो अर्ली, राइट, थिंकिंग दैट देयर विल बी लेस ट्रैफिक बिकॉज लोग अभी कम है. योर माइंड इज ऑल्सो लाइक दैट रोड. When you are wake up whole day's activities, it creates traffic in your mind. The congestion is there, and by the night actually you get a lot of topics to think about, which is going to affect your chanting. इसने ये बोला ऑफिस में, उसने वो बोल दिया ऑफिस में, इसने ऐसा हो गया. देखिए, जो हमारी स्लीप प्रोसेस है, दैट्स अ गॉड गिवन प्रोसेस. क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी इरेज हो जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी कन्वर्ट हो जाती है. Half of the things which happened in your life you actually forget what happened previously unless you think back, right? These things are, but when you are awake for the whole day, in the night you actually remember those, because this is in your mind, and that is the mental traffic you have. That's why our acharya, that's why in our dharma says that the best time to do the chanting is the morning time. Yes, there are constraints that in morning बच्चों को रेडी करना है, खाना बनाना, ये करना है. Maybe do half of the things in the morning, do half in the night. Right. But at least start something in the morning, because that is the only time when you get the least amount of disturbance in your mind. Right. So very, very important, early to bed and early to rise. It does not mean that um, you sleep very late and then wake up early in the morning, because then this is also like you have to sleep 6 hours, 6.5 hours. You have to complete 4 cycles of REM, non-REM phase. Then only your actually mind will get reset. Right. So sleeping to, early also is important. We will find time. A lot of time we know we waste here and there. Like before sleep, I will watch all my social medias and this and that. And once when all the updates are tick marked, then only I'll go to sleep. Right. So we can cut down the time. Second, taking care of health. Very important. It does not also mean that ki I'm doing sadhana and I'm so much stuck in sadhana ki I'll just relinquish my health. Health जाए भाड़, ये तो dead matter है ना. प्रभु जी ने बोला था dead matter है, भाड़ में जाएंगे, मैं तो I'm the soul. Because that soul is in the body, you have to take care of the body until you are here.
क्योंकि आप ऐसे सोचो, if you are not well, is your sadhana going to be good? No, right? Then we have to make sure that we are well. Srila Prabhupada जब भी कोई भी लेटर लिखते थे, Srila Prabhupada कोई भी लेटर लिखते थे, he always used to write, I wish you in a good health. Right? Always. So health is a very important thing. We have to take care of health, and along with that also comes what we eat. Right? We discussed that how the food also gives us the guna, and it affects our quality of spirituality. Right. So one important point taking care of health is like what we eat, not eating a lot of or so like वो तो खैर anyway no one eats here. So I'm not going to coming to that point. Right. Junk food, right? Something which affect our consciousness और बासी खाना मतलब बहुत बासी होगा जिसपे जर्म्स हो ज्यादा. Something we have to think. Drink a lot of water, keep your body dehydrated. मतलब we have to take care of health. Healthy mind can give a healthy bhakti also. Right. Then journaling. We discussed that point sometimes. Right. Now journaling is some point which is very important. I learned something today. I realized something today. I did some mistake today, or I got some good reward from doing the bhakti today. How would I remember after 5 years something like that happened? नहीं याद रहता ना. If you start writing down some important things, important events of your life in a journal, right? Maybe 1 year, 2 year down the line, when you open the book, you will actually understand. अरे मैं वहाँ था, तब मैं ऐसे सोचता था. Now I'm very different. Now I'm thinking very different. Keep your. It's possible to keep your journal. Uh, क्या कहते हैं? Private also. आजकल तो जर्नल ताला चाबी के साथ आते हैं. एक टांग लीजिए गले में. कोई नहीं खोल सकता. ठीक और online. Right, you can keep on the online journal. Office में time मतलब when we work on in the office. मतलब आई डोंट थिंक एनीवन जो 8 घंटे ऑफिस में बैठता है और 8 घंटे एक्चुअली काम करता है. इट इज नेवर मोर देन 4 आवर्स अनलेस कि कोई स्कूल में और जिसको क्लास ही लेनी है तो यू कैन नॉट एक्चुअली डू अदर थिंग. बट इन आईटी स्पेशली राइट वी ऑलवेज हैव टाइम 5-10 मिनट्स हियर एंड देयर. और एक्चुअली तो 5-10 मिनट्स काम होता है उसके पीछे 15 मिनट का तो गैप होता है. ठीक. तो मेरे साथ तो ऐसा होता है कई बार unless there is a meeting which is active. Right. Maybe that time we can utilize to write those realizations, those. And journals are not always for the only for the good point or only for the bad point. But it should be a your realization, your mixture of activities. What did you learn? What did you understand? Right. So journalism is a very, very powerful tool to understand if you are progressing in bhakti or not. Because after some after some years it tells like what was your mindset few years back. It also tells where you were few years back. Not just mindset, but also like today I started 10 rounds of chanting. You'll know on the day, okay, in December sometime in January 23 was the month where I started 16 rounds of chanting. Right. Now I'm at this, or 4 rounds of chanting. That way you have the accountability. Somewhere it's recorded. Right. So journaling, not journalism, sorry. Journaling is a very powerful tool to know the progress. And last but not least, the most powerful tool of that is your sadhana reporting. It includes all those things which came before. So I have just this example because in our congregation, on Saturday class, we fill this form every week, or at least try to fill every week, right? Or every month for the 4 weeks. But the rule is like for your weekly report is this. What this weekly report contains, like apart from name and all, average chanting time for the past week. What is the time when you are like on average finishing your chanting? In the morning, evening, what time? Right. How many hours you spend in reading this week? Hmm? Then how many hours? लिखे मत माता I'll share this one. ठीक है. Maybe we'll open a form and we'll keep on tracking all progress. Right.
How many hours you spend in hearing? Not just the class, but also apart from the class. Right. One thing is recommended, like Srila Prabhupada's lectures are must in the starting. Apart from that, if you have decided your Guru Maharaj, if you have already decided, then you must hear at least one lecture of him. Right. मतलब 40, 50 minute or 1 hour lecture at least. And if you have not decided Guru Maharaj, then it should go to Srila Prabhupada. He is our Param Guru before till Srila Prabhupada, right? And then your Shiksha Guru, wherever class you are attending, then that. And so, how many hours you have spent in hearing? Then, what time did you arrive at Satsanga program? Your weekly class? Are you the one coming at what time? 11:30? प्रसादम के पहले पहुंचते, प्रसादम ही तो खाना है, क्योंकि एक प्रभु जी ने बताया था प्रसादम खा खा के प्योरिफिकेशन होता है, तो बाकी देखा जाएगा जब टाइम आएगा, पहले प्रसादम खाते हैं. तो this is something for us to do. Then what services you do this week? Correct. Did you do any service this week? If yes, what? You have to note down this. So one service opportunity. Then yeah, these are the criteria, and then there are like to Niral Prabhu it goes, and this form goes to Niral Prabhu, and it is any challenges if we are facing. Like I'm facing some challenge, so I want to talk to Niral Prabhu or someone, my counselor, for that. So I'll talk someday about the counselor system, what it is, right? But you just think someone as a mentor, right? Who can, your spiritual mentor, who can actually take care of your spiritual come material problems, right? Can guide you in the right path. So if there are any challenges in following four regulative principles, or if there is any request for meeting, right? So these things we fill in the sadhana form. We'll have our own form, or I'll check with Niran Prabhu, because I'm not sure whether that form is for only 16 rounders or it is for everyone. I'm not sure. Right. If not, then we'll open our own form. And when you do, that will be a kind of Google form. When you do, make sure that you check, send a response to me also. Right. So that you can also get, that way you can track. Now, when you open this form after say 1 year, you know यार कि पहले मैं 12 o'clock, मैं अपना बता रहा हूँ, let me talk about my case. Few months back, मेरी चैंटिंग फिनिश होती थी 12 o'clock इन द नाइट, और 1 o'clock इन द नाइट, और कभी कभी 2 o'clock इन द नाइट, क्योंकि आई वॉज इन एग्जैक्ट माइंडसेट जो माता जी आपने बोला, दिन में सारा काम कर लेंगे, जब फ्री हो जाएंगे आई डोंट हैव एनी वर्क देन आई डू, क्योंकि कम डिस्टरबेंस होगा. बट देन इन वन नॉट वन मेनी लेक्चर्स आई हर्ड एंड दिस सेम पॉइंट केप्ट कमिंग कि मॉर्निंग टाइम इज एक्चुअली योर मोस्ट लीस्ट डिस्टर्ब टाइम, एंड यूटिलाइज दैट rather than putting things on the side. क्योंकि क्या होता है लास्ट में आप करते हैं ना, नींद आ गई, अगले दिन पे ही जाता है वो. Would have happened with every one of us, right? A lot of time this used to happen with me. When we do in the night, नींद आई या जबरदस्ती जग के कर रहे, नींद आ रही है बस किस तरह जग कर, नींद आ रही, दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, दिमाग सो रहा है, बस मुंह चल रहा है. ठीक, क्या चैंटिंग होगी, कुछ नहीं होगा. राइट. सो मॉर्निंग टाइम दैट्स व्हाई, क्योंकि अगर आपको कुछ भी होता है तो एटलीस्ट यू हैव सम कुशन, बिग कुशन एक्चुअली पूरा दिन है. नाइट में कोई क्वेश्चन नहीं है, फिर अगले दिन आप 16 प्लस जो बचा. देर आर डेज जब एक ऐसा मिस हुआ कि आई हैड टू डू 40 राउंड्स इन अ डे टू कंपेंसेट फॉर फ्यू डेज व्हिच आर मिसिंग, बिकॉज आई यूज्ड टू डू इन द नाइट. एक दिन नींद आई, दूसरे दिन कुछ और हो गया, मीटिंग चल गई 1 बजे तक, हो गया. राम नाम से नहीं रखनी चाहिए, यही मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए सुबह करेंगे तो आएगा ही. तो अगले हम कभी कभी हम भी बासी खाते हैं, देयर कैन बी सर्टेन कंडीशन कि हम बहुत बीमार है, बेड पे पड़े हैं, या we are serving someone and it is we are not actually getting time, then only in emergencies, and emergency should be emergency, not everyday emergency. Only those extremely emergency conditions we should put, right? So we'll come to know about that time, then we can see okay, पहले तो मैं केवल एक सर्विस जो मिलती थी वही करता था, now I'm doing more service. That means I think I'm progressing, but we should not be proud of it. अरे यार मैं तो देखो
not in a proud way, but at least what more can I do in that way. Hmm. So progress is not about speed, but it is about consistency. हाँ माता जी। आप ऑफर करके खाते हो माता जी, मतलब एक्चुअली a lot of time even I do that, होता है ऐसा ठीक, but I try to avoid as much as possible. Only very rare condition I मतलब I eat outside. ये बहुत बहुत ही मतलब कम। अब तो पहले जैसे होता था हम वेज ही ओनली, जैसे उडुपी में भी ऑनियन गार्लिक का इडली डोसा मिलता है तो खा सकते हैं ठीक, बट अभी आई ट्राई टू अवॉइड कि ठीक है नहीं खाना, मतलब धीरे धीरे इट विल कम नेचुरली टू यू। मतलब you don't do it artificially anything. That is one thing important. Don't do it artificially. नहीं मैं तो extreme restriction, बिना खाए मर जाऊंगा but I will not eat that. ठीक, not like that. It should come naturally. It will come naturally. ठीक, so that's what this point is. It's not about the speed, but it is about the consistency. Am I consistent in my all practices, spiritual practices? Right. This is what we have to think. And that's okay, उससे क्या प्रॉब्लम, आपको पता तो है ना। वो आपका ही नहीं है, उधर भी वही केस है। आपको टाइम निकालना पड़ेगा। नो, मैं नहीं भरूंगा या प्रभु जी आपके लिए आके नहीं भरेंगे। और मुझे तो सब सब तो छोड़िए, मुझे तो ये भी नहीं याद रहता पिछले हफ्ते क्या किया था 6 महीने पहले तो। दैट इज माई माइंड प्रॉब्लम। हो सकता है कोई बहुत फोटोग्राफिक मेमोरी वाले को याद रहता हो, मुझे तो वो कल का भी नहीं याद रहेगा कौन सा लेक्चर मैंने सुना था। ठीक, तो 6 महीने पहले का नहीं, इसीलिए जरूरी है कि अगर वीकली नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट 2 वीक में एक बार तो करके थोड़ा सा टाइम, इट डज नॉट टेक मच, इट टेक्स 5 मिनट्स, 10 मिनट्स मैक्सिमम टू फिल द फॉर्म, कलेक्ट ऑल द डेटा टू फिल द फॉर्म। क्योंकि हम कहाँ सुनते हैं, मेनली यूट्यूब, हिस्ट्री में आपको दिख जाएगा क्या सर्विस की, हमें पता ही होता है 6 महीने पहले की नहीं, लास्ट वीक का। ठीक, ठीक है, क्या क्या लेक्चर सुने वो भी हमें पता ही होता है, वी नो ऑल दोस थिंग। तो अगर वो रिसेंट है तो हमें जल्दी पता चलेगा, अगर बहुत पुराना है वी मे नॉट नो, याद भी नहीं रहेगा, तो हम कुछ भी डेटा भरेंगे और इट मे नॉट बी करेक्ट डेटा। तो एआई का आजकल चलता है ना, रॉन्ग डेटा रॉन्ग रिजल्ट्स, वही होगा। आप प्रोग्रेस कैसे कैप्चर करोगे जब आपका डेटा ही रॉन्ग है? लेकिन आपको पता कैसे चलेगा जब आपके पास है ही नहीं? आपको क्या पता कि आप पहले भी 2 घंटे सुन रहे थे, अब भी 2 घंटे सुन रहे हो? आपको लगता है शायद मैं पहले 1 घंटे सुन रही थी, लेकिन शायद वो आप 2 घंटे ही थे। जब तक आपके पास रिकॉर्ड नहीं, आपको नहीं पता चलेगा। ठीक। एंड वन लास्ट पॉइंट, यू आर नॉट अलोन इन दिस। Everyone in this world is facing problem. Everyone is worried, are they progressing in this path or not? Right. So you are not alone in this. Any problem? The last two things for this sadhana form is for that reason only. Do you have any challenges? Right. Do you want to meet and discuss about this? Like, I can tell you one simple example. Like I'm going, like me and Megha, we are going to have a meeting with Niral Prabhu today, like, to discuss something. So you are not alone. There is always someone who can guide you. Right? Any problem you can actually, not a problem, but as तो मतलब ये मत सोचिए कि कुछ हो गया, ठीक है, डोंट स्पेकुलेट, कोई ऐसा नहीं, बट समथिंग लाइक दिस ओनली, आर वी प्रोग्रेसिंग, व्हाट कैन वी डू बेटर ऑन दिस थिंग। ठीक, तो रेगुलर चेकअप, हम कहते हैं ना हेल्थ चेकअप हमेशा हर 1 साल पे करना चाहिए, तो रेगुलर चेकअप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, ये करते रहना चाहिए हमें बीच में। सो यू आर नॉट अलोन इन दिस, एनी प्रॉब्लम विल ऑल फेस टुगेदर, विल ऑल डू इट टुगेदर, राइट? एंड why this thing is very important, I'll come to the last point before we'll close this. And most important, I would say, this is important because it's urgent. It's highly, highly, highly urgent. And we have to understand that. ठीक, वो प्रभु जी रात में सोए, सुबह नहीं उठे। हमें नहीं पता हम रात में जब सोते हैं क्या हम सोचते हैं। ठीक, मतलब when I was hearing that, I was having this realization, कल ही मैंने मेघा से बोला कि हम रात में क्या सोच के सोते हैं, we don't even know। सपने पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, बट हम अगली सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे, we don't know what would be our last thought। ठीक, जो हम कहते हैं थॉट्स एंड कर्मा, लास्ट थॉट तो हमें नहीं पता है। तो अर्जेंसी बहुत ज्यादा मिसिंग है हमारे में।
That's why we don't think about this. Think that urgency has to come. It has to come. क्योंकि there is no other way. किसी के जीवन का कोई भी भरोसा नहीं, कुछ भी एक मोमेंट का भी नहीं पता. ठीक, what we are living, what क्या हो, ठीक है. तो with that we'll finish off. ठीक. पंचकृत्य विषय कृपा सिंधु व्यवचार पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. कोटि वैष्णव की जैसे पाठ कीजिए. विदाई गौर प्रेम हरे कृष्ण.